हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल उसके लिए टॉपिक 20 कवर कर रहे हैं, जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अपन यहाँ पे 25 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन इसके और भी जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी टिल एग्जाम तक जो ये सीरीज स्टार्ट रहेंगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मींस नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वैसे देखें, मैकेनिकल के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, फॉर्गिंग प्राइमरी इन्वॉल्व। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट melting and solidifying metal, second plastic deformation via compressive force, third adding material layer by layer, and fourth cutting material off. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, plastic deformation via compressive force, because forging shape metal through pressure without melting. Next, second, which manufacturing process involve pouring molten metal into a mold? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्गिंग, वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कास्टिंग। मोल्टन मेटल इज शेप्ड बाय सॉलिडिफाइंग इन अ मोल्ड। नेक्स्ट, थर्ड, विच मशीनिंग ऑपरेशन रिमूव मटेरियल यूजिंग एब्रेसिव्स। देखो ऑप्शन है फर्स्ट टर्निंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, माइलिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यूज एब्रेसिव फॉर फाइन सरफेस फिनिशिंग। Next, fourth, in which process are metal shaped at temperatures above their recrystallization point? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, कास्टिंग, मशीनिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग अलाउज लार्ज डिफॉर्मेशंस विथ लो फोर्स। Next, fifth, which process use heat and pressure to join metal without melting? तो देखो ऑप्शन है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कास्टिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ब्रेजिंग। ब्रेजिंग मेल्ट फिलर metal but not base metal. Next, sixth, 3D printing is an example of। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मिंग एंड कास्टिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज मटेरियल इज एडेड लेयर बाय लेयर। नेक्स्ट, सेवन, इन मशीनिंग व्हाट इज फीड। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कटिंग स्पीड, सेकंड डेप्थ ऑफ कट, थर्ड डिस्टेंस मूव बाय टूल पर रिवॉल्यूशन, एंड फोर्थ मटेरियल रिमूवल रेट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डिस्टेंस मूव बाय द टूल पर रिवॉल्यूशन, मींस फीड रेट कंट्रोल चिप थिकनेस। Next, 8. Which manufacturing method is suitable for mass production with higher repeatability? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग, बैच प्रोडक्शन, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड वन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स। नेक्स्ट, नाइन्थ, सरफेस फिनिश इन मैन्युफैक्चरिंग इज मेजर्ड इन। तो देखो ऑप्शन है माइक्रॉन्स, मिलीमीटर्स, इंचेस, फीट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट माइक्रॉन। सरफेस रफनेस इज वेरी स्मॉल स्केल। नेक्स्ट, टेंथ, विच प्रोसेस यूज हाई प्रेशर फ्लूइड टू रिमूव मटेरियल। तो देखो ऑप्शन है ईडीएम, वाटर जेट मशीनिंग, लेजर कटिंग एंड केमिकल माइनिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वाटर जेट मशीनिंग, बिकॉज इट यूज हाई वेलोसिटी वाटर एंड एब्रेसिव्स। नेक्स्ट, 11, इन कास्टिंग व्हाट इज श्रिंकेज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, सेकंड वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, थर्ड पोरोसिटी फॉर्मेशन एंड फोर्थ इम्प्योरिटी रिमूवल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, बिकॉज इट कैन कॉज डायमेंशनल वेरिएशन। नेक्स्ट, 12th, विच जॉइनिंग मेथड यूज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट। तो देखो ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बिकॉज हीट इज जनरेटेड बाय रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। नेक्स्ट, 13, विच जॉइनिंग मेथड यूज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट। तो देखो ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो आंसर है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हीट इज जनरेटेड रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। नेक्स्ट, 14,
विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोवाइड द मोस्ट वर्सटाइल शेपिंग कैपेबिलिटी? तो देखो ऑप्शन है कास्टिंग, मशीनिंग, फॉर्गिंग, वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मशीनिंग। इट कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप विथ प्रिसीशन। वैसे देखें कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बैच प्रोडक्शन इज। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट एट वन टाइम, सेकंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटीज, थर्ड कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन एंड फोर्थ रैंडम प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड producing product in small to medium quantity because it allow customization and flexibility. Next 16, in CNC programming G code primary control। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर, सेकंड मशीन टूल मूवमेंट, थर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ टूल ल्यूब्रिकेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मशीन टूल मूवमेंट बिकॉज G code means Google code command guide tool path। Next 17, additive manufacturing technology is specially suitable for। तो देखो ऑप्शन है mass production of part with no customization, second producing complex geometrics and prototypes, third high volume forging and fourth casting large metal part। तो करेक्ट आंसर है सेकंड producing complex geometrics and prototype because it enable flexibility and details। Next 18, which heat treatment process harden the surface but keep the core soft। तो देखो ऑप्शन है annealing, carbonizing, normalizing and tempering। तो करेक्ट आंसर है सेकंड carburizing because carbon penetrates surface forming harden outer layer। Next 19, in job shop manufacturing production is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट high volume and repetitive, second custom small batch with high variety, third continuous process and fourth automated assembly line। तो करेक्ट आंसर है सेकंड custom small batch with high variety because job shop produce specialized varied item। Next 20, which manufacturing process is called cold working process। तो देखो ऑप्शन है hot rolling, second cold rolling, third annealing and casting। तो करेक्ट आंसर है सेकंड cold rolling because deformation occur at room temperature। Next 21, in manufacturing tolerance define। तो देखो ऑप्शन है allowed range of dimension deviation, second material properties, थर्ड प्रोसेस स्पीड एंड फोर्थ कॉस्ट एस्टिमेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट allowed range of dimension variation because it ensure part fit and function properly। Next 22, the main purpose of heat treatment is to। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट change shape, second modify mechanical properties, third increase size and fourth cool down part quickly। तो करेक्ट आंसर है सेकंड modify mechanical properties because it improve hardness, strength and ductility। Next 23, which machining operation is used to create hole। तो देखो ऑप्शन है turning, drilling, milling, grinding। तो करेक्ट आंसर है सेकंड drilling। Drilling creates circular holes। Next 24, the allowance provided for machining is to। तो देखो ऑप्शन है compensate for unpredictable variation, second increase cost, third reduce surface finish and fourth increase weight of product। तो करेक्ट आंसर है first compensate for unpredictable variation because it allows final dimension after machining। Next 25, selective assembly in manufacturing refers to। तो देखो ऑप्शन है assembling part without any measurement, second grouping part into classes to reduce tolerance stack up, third random part selection, fourth none of these। तो करेक्ट आंसर है सेकंड grouping part into classes to reduce tolerance stack up because it reduce assembly error and improve interchangeability। वैसे देखे जनरल नॉलेज, मैकेनिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।